Good evening, guys. Welcome back to Stock Explorer once again. Today is Wednesday. What a beautiful day it was in the stock market today. Market tested all their support levels beautifully, and we're going to talk about what we expect tomorrow since the global market looks really strong. First news, which is coming in first, Hyundai Motors IPO has been approved, and the issue is going to open on 15th October, which will close on 17th October. Price band which they're expecting is 1800 to 1960 rupees, which is a big IPO, 27,000 crore. So what I would suggest is everybody will get IPO. So you all don't need to rush for it. Take it easy, apply once, and you all will be getting it. We aren't expecting any big listing gains, but let's see. So take it easy with this IPO. It's a very big IPO. It will take little time to absorb the whole IPO size. So if it fills up, that's even great. Like I'm not expecting to go around 2-3 times. अगर एक बार भी भर जाएगा एक गुना भी वो भी बहुत होता है. And let's go and look like what are we expecting in the market. First thing we discuss about the Nifty support and resistance because we go with that as well. तो आज मार्केट क्लोज हुई है 25,020 के आसपास, विच इज़ गुड साइन. 24,800 से जंप करके 25,000 पे क्लोज हुई है. इट्स अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, बट अभी भी कुछ कमी दिख रही है. आई मीन 25,000 के ऊपर एक वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है. इट लुक्स फाइन बट नॉट दैट प्रॉमिसिंग. तो ठीक है. टुमारो द फर्स्ट रेजिस्टेंस विच आई थिंक इज 25,200. अगर उसको तोड़ा देन इट विल गो टू 25,300, and final resistance I think is 25,400. If it breaks that, then sky is the limit because उसके बाद वो तोड़ के निकलेगा 26,000. बट अभी वो बात करके फायदा नहीं बिकॉज द मोमेंटम इज नॉट दैट ग्रेट. अच्छा, आप लोग सोचते होंगे हाउ डू आई गेट ऑल दिस. आई शो यू वेयर आई एनालाइज ऑल दिस राइट नाउ. सो एक पेज है, इट्स अ वेबसाइट कॉल्ड ऑब्स्ट्रा. वहाँ पे मैं देखता हूँ कॉल एंड पुट रेशियो, एंड देन आई डिसाइड लाइक what is the levels which I'm expecting. So strong support will be again 25,000, which where the market's closed. अगर उसके नीचे जाना start करता है again, which there are probability that it can go down as well, go down to 24,900 and again test the levels of 24,800. मार्केट ने कई बार, एक्चुअली 2 बार, ऑलमोस्ट 3 बार लेवल टेस्ट कर दिया है. अगर ये फिर से लेवल टेस्ट होगा देन दिस लेवल बिकम वीक एंड मार्केट्स कैन गो डाउन फ्रॉम देयर अगेन. सो आई रियली होप दैट इट डजंट टेस्ट द लेवल, और इसके बाद फिर बेयर्स हावी पड़ जाएंगे बुल पे और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर. लेट मी शो यू द स्टॉक. व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, लाइक व्हाट आर द टॉप गेनर्स एंड एवरीथिंग. आज देखिए आप हीट मैप. ट्रेंड ऑल टाइम हाई, 8,000 रुपीज़ का स्टॉक हो गया. देयर इज न्यूज दैट दे आर गोना स्टार्ट इन डूइंग बिजनेस इन लैब ग्रोन डायमंड्स. ऐसा न्यूज़ में आया है. आई मीन company like these are only the one who do regular R&D and then they bring up new things. So Trent is going to do that as well. आज स्टील सेक्टर बहुत ढीला रहा. देखिए GSW स्टील जो लास्ट वीक सबसे स्ट्रॉन्ग था, आज -2%. बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एक्चुअली, टाटा स्टील, SBI लाइफ एंड टाइटन वर द वन हु वर बॉटम परफॉर्मर्स. टॉप गेनर्स में देखिए ट्रेंट, अडानी एंटरटेनमेंट, BEL, अडानी पोर्ट, M&M were the top gainers. So tomorrow I'm expecting Asian Paints to be the top one, along with Pidilite and Berger Paint, because crude में जो आज भयंकर क्रैश आया है. अभी अभी दिखाता हूँ. ओके, सो ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रही हैं. US going all time bullish. US US is 1.32 Nasdaq up right now, almost 1% S&P, and 0.252%, around 25% के पास closing होनी चाहिए अभी, and it's looking very bullish from US end. In Europe, FTSE looks weak, 1.38% की weak closing दी है, but Gift Nifty is showing slight positivity, meager सी positivity 28 पॉइंट की. The catching point here is Brent crude. Look at it. 2 दिन पहले 81 पे था. राइट नाउ द ब्रेंट क्रूड इज एट 77. 3 रुपए का चेंज, 4% की फॉल. ये क्यों हमारे लिए फ़ायदा है? बिकॉज मोस्ट, एज आई टोल्ड यू, most of our industry is still dependent on crude oil, and if crude goes down our raw material cost goes down. So companies like Astral, Pidilite,
एशियन पेंट्स, इंडिगो, इन सब का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है. अब इनके प्राइसेस गिरेंगे, then you will see a very positive effect on these stocks tomorrow. So keep an eye on that. Apart from that, guys, gold may slight negative, and crude oil, as I discussed with you all. हैंगसेंग के मार्केट में मैं देख रहा था 10% का फॉल है. आई मीन इट कैन बी अ कॉन्ट्रा मूव फॉर इंडिया कि भाई हैंगसेंग में 10% का फॉल आया है, बट आई जस्ट विश दैट ये नेगेटिविटी हमारे मार्केट में कल ना आए, बिकॉज 10% का एक मार्केट में फॉल आया है. आई होप इट डजंट कम, द इफेक्ट डजंट कम टू इंडिया टुमारो. And few other things which I wanted to share as well with you all. One moment. Yeah, this is the page where I was looking all the data, like where I get this, the support and resistance. This is one of the other page through which I analyze. So this is the page where you can see the option chain and the amount of call and the put which is happening. So what here it shows is put call ratio. Basically, the amount of people who are sitting on put and the amount of people sitting on call. So put divided by call is equal to put call ratio. So you can see put में बहुत कम लोग बैठे हैं. अगर put ज़्यादा लोग सेल करके बैठे हैं, it means they expecting the market to go up. But जब put में लोग कम बैठे होते हैं, then it means that they are not sure whether the market will go up. कॉल में अदर साइड आप देखिए कितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है. इट मीन्स कॉल ऑप्शन सेल हो रखे हैं, and they expecting the stock to go down, but there's a strong call writing at the point where we closed. You can see here जिस पॉइंट पे हम क्लोज हुए हैं और उसके नीचे भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रखी है. सो 25,000, 25,000 is going to be a strong support if the market goes down from 25,100. It's going to be very strong support because you can see put writers also, but call writers हावी हो रहे हैं put writers पे. So this will be a strong support and resistance zone tomorrow. If the market breaks this, then there's strong supports around the same level. 24,400 पे देखिए ज़्यादा पुट राइटिंग है, एंड देन हेयर. बट आप कॉल राइटिंग देखिए, हर लेवल पे एक्सेस कॉल राइटिंग, हर लेवल पे कॉल राइटिंग एक्सेस ही दिख रही है. तो इसका ध्यान रखने वाला है. एंड यू कैन ओपन दिस पेज एज वेल. आई पुट इन द लिंक सो यू कैन ऑल्सो ट्रैक this call and put writing from Opstra. Opstra is a great platform for people who really want to do option trading and do some straddle and triangle. We'll talk about that some other time. Okay. Few stocks which I was thinking to show you all. First one is gonna be Pedialyte because tomorrow crude is down, so Pedialyte will be a good stock to watch. आज इसने jump दिखाया at the end, but looks like a great stock here to keep an eye on. Right now the stock is trading at 3,185. I wouldn't say tomorrow market खुले और आप इस पे jump करिए. Take your time, hold on, check how the markets react, and then you try to read the stock as well. Another good stock will be Reliance Industry. That will be the main market mover. अभी Reliance ने अपना bottom test कर लिया है and started moving up. So Reliance का momentum is looking strong. The moment it crosses 2800, we can keep an eye on that. अगर आप ऑप्शन में जाना चाहें 2800 का आप पूरा इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं. I cannot recommend to buy, but you can keep an eye on that. And from here we are expecting the markets to stabilize. If it goes down, अगर रिलायंस 2700 के नीचे जाना स्टार्ट करेगा, then this is a severe crack, which is not a correction but actually a bear trend will start because इसका 20 day and 250 day का smoothing average नीचे आ रहा है. So I hope it doesn't cross 2700. Next stock which I really wanted to share was, apart from this, let me show you, Axis Bank. एक्सिस बैंक अपनी वैल्यूएशन पे आ चुका है, ऑलमोस्ट फेयर वैल्यूएशन. द स्टॉक वाज ऑलमोस्ट ऑन द सेम प्राइस एट द स्टार्ट ऑफ 2024. आपको उसी प्राइस के आसपास मिल रहा है अभी, साल भर बाद भी. एंड probably after this you won't be getting it, so you can keep an eye on this stock as well. Few good news which is coming in. IRB Infra. आईआरबी इंफ्रा का जो रिपोर्ट आई है कि उनका जो अर्निंग है 19% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है, विच इज़ इक्वल टू 502, ऑलमोस्ट 502 करोड़ की अर्निंग दिखाई है उन्होंने इस साल. नो डाउट गाइज, बिकॉज जब से ये फास्टैग आ गए हैं, द एफिशिएंसी ऑफ दिस टोल टैग्स have become really good. Like people before, there was a lot of red tape with them because no fast tag आपसे कैश लेते थे, and then
how much the money was going to the owner, you never know. So जब से फास्टैग आए हैं, कंपनी लाइक आईआरबी आर ग्रेट potential to make more money. So IRB का चार्ट भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, like where is IRB standing as well, because this is a great news for IRB. And you can see, one moment, IRB info, perfect. Right here you can see the stock has started reacting before only. I think right after the market was about to close, right at the end when the markets were about to close, you can see the stock started reacting. So keep a close eye, because this is a very positive result, and people will be really reacting on this one before other people will jump in. So, and it is on a strong support level again, as you can see, which is around 58. This is the strong support. The stock went up, came down, tested, jump back again, tested again, jump back again, tried to come back again, jump back again tested, went up. Now this is the first time it crossed again after how many months? After March, and then it's trying to go back up. अगर इसके ऊपर ये वीकली में भी क्लोजिंग दे देता है, लेट्स सी, तो डेली चार्ट पे था, लेट्स सी ऑन द वीकली चार्ट. यू सी वीकली चार्ट में it's trying to go down, but नहीं जा रहा है. So if it close above this line, the stock has strong momentum still on. So keep an eye on IRB. थॉमस कुक ने अपना एक नया होटल लॉन्च किया है इन लोनावला विद 112 रूम्स की प्रॉपर्टी है, 112 रूम की प्रॉपर्टी है. एवरी रूम हैज private, like exquisite swimming pool. So that's a great news for Thomas Cook. You can keep an eye on Thomas Cook. Krishna Defense has won an order of 88 crore. बड़ा ऑर्डर है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको ऑर्डर दिया है टू मेक स्पेशल वेल्ड कंज्यूमेबल. सो एक मिनिस्ट्री की वजह से ऑर्डर आया, एंड द ऑर्डर क्वांटिटी सो फार इन दिस ईयर 2024 में बढ़ के हो गई है 272 करोड़ की कंपनी को, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इटसेल्फ. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वजह से उनको 270 करोड़ के आसपास ऑर्डर आ चुका है अभी तक, विच इज़ ग्रेट न्यूज़. इतना भरोसा तभी करती है कंपनी जब कंपनी के अंदर कुछ पोटेंशियल होता है. सो एंड दैट टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो कृष्णा डिफेंस कैन बी a long term pick for a lot of people who really want to bet big on the Indian defense industry. इंडियन ऑयल मिनिस्ट्री का एक नोट आया गाइस कि जो एथनॉल की ब्लेंडिंग होने वाली थी 2023 के लिए उनको इंक्रीज किया था, अब वो आ गई है 2025 तक. सो एथनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है 20% ऑफ ब्लेंडिंग का, वो 2025 से ही स्टार्ट कर देंगे. सो विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द शुगर स्टॉक्स लाइक बलरामपुर चीनी, like EID Perry, one of the good stocks. I have to make a good video on EID Perry because this is one of the stock which is on hold with big investors. You can see how the stock is reacting very strongly on its 20 DMA. Very nicely. Comes on it, jumps back. Comes on it, jumps. Acts as like a great support here. This 20 MA, the great support for EID Perry. Other stock, strong stock, Balrampur Chini, guys. Because if the ethanol blending will react, look at the stock. Whole market is down, and the stock is not even moved little bit as well. So sugar stocks will be on watch tomorrow. And by the way, guys, BJP has won the election in Haryana unexpectedly. Nobody expected this. एग्जिट पोल्स के लिए तो मतलब क्या ही कहने. लास्ट टाइम भी एग्जिट पोल जून में यही बता रहे थे कि कुछ और होगा, एंड देन समथिंग एल्स हैपेंड. दिस टाइम दे वर टेलिंग कांग्रेस का होएगा, एंड अदर वे अराउंड इट हैपेंड. सो एग्जिट पोल को तो आप उठा के फेंक दीजिए, नो यूज. So great news for BJP, guys. Crude oil, as I discussed, is down, which will react tomorrow with all these different stocks. And I just hope that markets can hold levels of 25,000. But if it goes back to 24,800, I wouldn't say that sell your portfolio and leave everything. But I wouldn't say this, but don't try to trade aggressively. Go easy. Do not try to trade anything. Keep yourself light rather than carrying a lot of positions. So this will be one of my quick remedy for tomorrow and for this whole week, because the options premium are way down, it's dried up, and you will be trying to buy the option because of its dried price. But keep some cash with you. Let's see if the stock falls, if the Nifty falls and touch the level which I told you.
23,900. As I also told you one more stock, GRSC, the other day. GRSC ने क्या मार्केट में रिएक्ट किया है. It was around 9% up, guys. So you need to keep an eye on GRSC. डिफेंस प्लेयर का ये भी स्टॉक है. Do not try to sell your holding. If you're holding it, keep holding it. It will go back to 2000, 2700 levels probably by the end of this year itself. So do not sell any of your stock, and do not try to make any new positions in this kind of market as well. Rest apart, guys, have a wonderful day tomorrow. I'm posting this video at night because I'll be traveling tomorrow morning. So have a good one and see you tomorrow evening. Thank you.